Hi everyone, good morning. Welcome to the mathematics of class 7. We were doing chapter 4 simple equations. So let us start question number 2 of exercise 4.2. Question number 2. Give first the step you will use to separate variable and then solve the equation. Means we have to separate the variable. So in the first one A1 3L is equal to 3L equal to 42. So here L is the variable and 3 is the constant. So we have to separate the variable. We have to separate this variable. इस variable को हमको अलग करना है, separate करना है. Okay, इसको हमको single करना है. So we have to remove what we have to do. We have to remove this 3 from the variable. ये variable में से हमें 3 अलग करना है. So what should we do to remove 3 from the variable L? ऐसे क्या करें हम कि ये 3 अलग हो जाए. So in the previous question, in the question number 1, when one thing I have told you that when x minus 3, suppose x minus 3 equal to 3 is given. So to remove the variable in this condition, to remove the variable, what we have to do? We will in this minus 3 is given. So when the minus 3 is given, so we will add plus 3 on both the sides. Okay, this is the first condition. And second, if when x plus 3 equal to 3 is given, in this condition how to remove the variable? इसमें से variable कैसे remove करेंगे? So in this plus 3 is given. So यहाँ पे plus 3 दिया है तो हम minus 3 करेंगे दोनों साइड. यहाँ minus 3 दिया है तो हम plus 3 करेंगे दोनों साइड. क्यों करेंगे? To remove the variable. Variable को अलग करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा. But in this condition no plus and no minus is given. यहाँ पे तो हमें plus भी नहीं दिख रहा है, minus भी नहीं दिख रहा है. What is given? 3L equal to 42. So when the minus is given, we do the plus, and when plus is given, we do the minus. So here 3L is given. 3L means in between no plus sign is given, no minus sign is given. ना plus है ना minus है. This is an into. कोई भी sign नहीं होता है. It means multiplication. जब हम प्लस में माइनस करते हैं, माइनस में प्लस करते हैं, तो फिर हम इंटू में क्या करेंगे? डिवाइड. और डिवाइड में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में डिवाइड एंड डिवाइड में मल्टीप्लाई. So here multiplication is given 3 into L. So when 3L is given, so what we will do to remove 3? यहाँ पे अगर multiply दिया है तो हम इसको divide करेंगे, 3 से ही divide करेंगे, किसी नंबर से divide करेंगे. Operation should be followed on both the side. अगर हमने यहाँ पे divide 3 किया है, इस तरफ भी 3 से divide होगा, okay? Because the operation should be followed on both the side. Now 3 and 3 can be cancelled. L equal to 42 upon 3. अब इसको सॉल्व कर लो. 43 और 42 और 3 को डिवाइड कर दो. अभी 3 से कैंसिल होता है कि नहीं इसको देखते हैं. यहाँ पे 4 और 2 है. 4 plus 2 equal to 6 और 3 की टेबल में 6 आता है. यस, 3 to the 6 मतलब ये 3 से कैंसिल होगा. तो 3 1 3, 3 1 3, कैरी 1. यहाँ पे देखो हमने वेरिएबल अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया, वेरिएबल सिंगल हो गया. सो एंड वन थिंग मोर इज गिवन, गिव फर्स्ट द स्टेप. स्टेप डी ऑल्सो हैव टू राइट द स्टेप. तो अभी हमने यहाँ पे स्टेप नहीं लिखा है. आप यहाँ पे स्टेप भी लिखोगे बाय डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ द साइड. डिवाइड 3 ऑन बोथ द साइड. ओके, सो गॉट इट. नाउ कम टू द B1. In the B1, B upon 2 equal to 6. B upon 2 is given and we have to remove this variable and constant. We have to separate this variable. इसको separate करना है हमें. So मैंने क्या होता है, तो प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे एंड डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे. So here we can see that B upon 2 it means division. ये अपॉन दिया है, ये डिवाइड होता है और डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. और क्यों करेंगे? क्योंकि हमको ये वेरिएबल को सेपरेट करना है. वी हैव टू सेपरेट दिस वेरिएबल. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द स्टेप. सो व्हाट स्टेप वी विल राइट? हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई करेंगे? अब क्या मल्टीप्लाई करना है? यही वाला नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पे यही नंबर इसके साथ जो था वही डिवाइड हुआ था. यहाँ पे यही नंबर जो है दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा. मल्टीप्लाई 2 ऑन both the sides. Multiply 2 on both the sides. Okay. Now B upon 2 is given and 6 is given. So we have to multiply 2 on both the sides. So write multiply 2 and multiply 2.
बिकॉज द ऑपरेशन विल बी फॉलोड ऑन बोथ द साइड. एक साइड नहीं करेंगे, दोनों साइड फॉलो करेंगे. 2 and 2 will be cancelled. B. अब ये D सेपरेट हो गया, सिंगल हो गया, and 6 2 is 12. So answer is B equal to 12. Now come to the C1. P upon 7 equal to 4. Here also we can see that division is given. P upon 7 means divide. And we know that whenever division is given, so we have to multiply. Division दिया है तो multiply करना है. And first write the step. Multiply. क्या multiply करना है हमें? वेरिएबल के साथ क्या है? 7 है. ये वेरिएबल है. P is the variable and with variable 7 is given. So we have to multiply this 7 on both the side. Multiply 7 on both the sides. Okay. Now P upon 7 is given and equal to 4 is given, and we have to multiply 7 on both the sides. Multiply 7 on this side and multiply 7 on that side. 7 and 7 will be cancelled. Now because we have make the P separate, and 4 7s are 28. P equal to 28 is the answer for the C1. Clear? Now come to the D1. 4 in the D1, 4s equal to 35 is given. So in this variable is x and 4. In between both of them we can't see any sign, either plus sign nor the minus sign. So what does it mean? It means multiplication is correct. So when the multiply is given, so what should we do to separate the variable? हमको variable को अलग करने के लिए क्या करना है? So what I told you, when multiplication is given, so we have to divide it. So we have to divide. इसमें हम डिवाइड करेंगे. Which number should be divided? कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे? Which is given with the variable. जो वेरिएबल के साथ दिया है वही नंबर डिवाइड होगा. So with the variable x 4 is given. So by dividing or write divide 4 on both the sides. Okay, by dividing 4 on both the sides. Now 4x equal to 25 is given. So what we have to do? We have to multiply. Multiplication is given, so we have to divide. What number we have to divide? We have to divide 4. 4x equal to 25 is given. And in this multiplication is given, so we have to divide 4 on both the sides. So divide we will write like this: 4x upon 4 equal to 25 upon 4. Now 4 and 4 can be cancelled. X is remaining. X equal to 25 upon 4. Okay. And how we will come to know that 25 can be cancelled with 4 or not? 25 4 से cancel होगा कि नहीं होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? Here we can see by the divisibility test. Divisibility test करके देखते हैं. Here 25 is given. 2 plus 5 is 7. Total is 7. And 4 के टेबल में 7 आता है क्या? नहीं आता है. So it will not be divided. So the answer is 25 upon 4. Got it? Now come to the E1. E1 is 8y equal to 36. Again here we can see that between the variable and the number no sign is given. So it means it is a multiplication. And when the multiplication is given, so to separate the variable we have to divide it. So by dividing, divide 8 on both the sides. Okay. Now 8y is given equal to 36. We have to divide. Divide means upon 8, and here also upon 8. 8 and 8 cancel. Y is remaining. Y is equal to 36 upon 8. And 36 comes in the table of 8. Now we can cancel it with the table of 2. 2 4s are 8. And 2 1s are 2. Carry 1. 2 8s are 16. 2 18s are 36. Y equal to 18 upon 4. Again we can cancel it with the table of 2. 2 2s are 4. 2 9s are 18. 9 upon 2. So 9 cannot be cancelled. 9 doesn't come in the table of 2. So the answer will be 9 upon 2. Okay. Now come to the F1. F1 is z upon 3 equal to 5 upon 4. Here variable is z, and we have to separate it with the, we have to remove 3 with the variable z. जो z के साथ जो 3 दिया है, we have to remove that 3. It means z upon 3 means, here z upon 3 means z divided by 3. So division is given, and whenever the division is given, so what we have to do? Yes, correct. We have to multiply it. What we have to multiply it?
What we will multiply? Yes, 3. We will multiply 3 on both the sides. So we have to write the step. So we can write it as multiply 3 on both the sides. Multiply 3 equal to 5 upon 4 is given. We have to multiply 3 on both the sides. So write multiply 3 in this side and multiply 3 on that side. Now the 3 and 3 can be cancelled. Remaining z. Z equal to 5 upon 4 into 3. Now can you cancel it? 4 or 3 कुछ cancel हो रहा है? No. So simple multiply it. 5 3 is 15. 15 upon 4 into 3. 5 3 is 15 and 15 upon 4. So the 15 doesn't comes in the table of the 4. So answer will be z equal to 15 upon 4. So here we complete the question number 2. So in the next video we will meet with the question number 3. Hope you understood this question. So till then take care. Bye bye.